फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इसके टाइप्स, क्लासिफिकेशन, देन इसके बाद हम देखेंगे एनालिसिस। इनका एनालिसिस कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम किस मेथड का यूज़ करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। एनालिसिस के लिए किस मेथड का यूज़ करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। सो फर्स्ट इज short transmission line, second is medium transmission line, third is long transmission line, ओके। सो इनमें हम देखते हैं डिफरेंस कहाँ आएगा, कंपैरिजन करते हैं इसका, ठीक है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन 80 किलोमीटर तक अगर कोई लाइन डली हुई है तो उसको हम इसके अंडर लेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए। देन वोल्टेज रेंज इज अप टू 20 kV, frequency range is in power frequency it is 50 to 100 hertz। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में डिस्टेंस होगा 80 किलोमीटर टू 160 किलोमीटर। वोल्टेज रेंज is 20 kV to 100 kV, and this is also operated at power frequency range. Third is long transmission line. Length is 160 kilometer to 280 kilometer. The voltage range is greater than 100 kV, and they are operated as power frequency as well as carrier frequency. These lines can be operated in both power frequency and carrier frequency. अब देखते हैं इसमें डिफरेंस हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, प्रायोरिटी की बेसिस पे। सो मान लीजिए कि एक लाइन है, वो है 110 kV एंड ऑपरेटेड एट कैरियर फ्रिक्वेंसी। सो इसमें हम कैसे क्लासिफाई करेंगे कि कौन सी कैटेगरी में आएगा। तो इसके लिए हम प्रायोरिटी रख देते हैं। प्रायोरिटी के हिसाब से सबसे पहले हम प्रायोरिटी देखेंगे फ्रीक्वेंसी को, देन उसके बाद हम प्रायोरिटी देंगे वोल्टेज को, देन उसके बाद हम प्रायोरिटी देंगे डिस्टेंस को, ओके। सो इसके हिसाब से ये कैरियर फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहा है, मीन्स कैरियर फ्रिक्वेंसी पे कौन ऑपरेट कर सकता है, सिर्फ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। सो दिस इज लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ओके। इस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। प्रायोरिटी हम सबसे पहले देंगे फ्रिक्वेंसी को, देन वोल्टेज, देन डिस्टेंस, ओके। नाउ नेक्स्ट इज एनालिसिस of transmission line. So एनालिसिस मतलब क्या होता है कि हमें अननोन क्वांटिटी निकालनी है
with the help of known quantities. With the help of known quantities, we have to find unknown quantities. So here, known quantities is receiving end voltage and receiving end current, and unknown quantities is sending end voltage and sending end current. So अननोन क्वांटिटी से नोन क्वांटिटीज निकालने के लिए हम ट्रांसमिशन लाइन को कंसिडर करेंगे टू पोर्ट नेटवर्क। ओके, सो हमारा मॉडल कैसा बन जाएगा? हमारा मॉडल बन जाएगा, दिस इज अ टू पोर्ट नेटवर्क, इन दिस पैरामीटर्स आर ए बी C D, VS IS IR VR। अब देखिए टू पोर्ट में यहाँ पर डायरेक्शन ऐसा होता है, तो हम IR को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। इसके हिसाब से हमारी इक्वेशन टू पोर्ट की क्या बनेगी? VS IS A B C D VR IR। ओके, ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन इज VS A VR plus B IR, and IS is C VR plus D IR. So A is what? A is VS by VR when IR is equal to 0. So it is inverse voltage gain, and its unit is dimensionless. Next parameter is B. B is VS by IR when VR is equal to 0. That is what? Transfer impedance, and its unit is ohm. Third is IS by VR when IR is equal to 0. It is transfer admittance, and unit is mho. Fourth one is IS by IR when VR is equal to 0, that is inverse current gain. So this is the four parameters A, B, C, D. With the help of these parameters we can find unknown quantities. अब एक नोट है, अगर हम पैरामीटर्स बढ़ाते हैं, लाइन पैरामीटर्स को हम बढ़ाते हैं, तो B and C ओनली चेंजेस, B and C ही चेंज होंगे, क्योंकि इसकी इम्पिडेंस है और एडमिटेंस है, ठीक है, और बाकी सब डायमेंशन लेस है। सो A and D will not change. So when we increase line parameters, B and C only changes, ठीक है। और दूसरा, हमें हमेशा ये चेक करना है AD माइनस BC शुड बी 1, ठीक है।
नाउ टॉपिक इज, अब देखते हैं एनालिसिस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का एनालिसिस कैसे करेंगे? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, एनालिसिस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ओके, so short transmission are led for a smaller distance and they are operating with smaller quantities. So first is shorter length के लिए operating quantities smaller होंगी, quantities smaller होंगी, ठीक है। करंट एंड वोल्टेज स्मॉल होंगे इसमें। थर्ड इज दे आर, फोर्थ इज ऑपरेटिंग एट फुल लोड कंडीशन। फुल लोड कंडीशन, फुल लोड कंडीशन पे है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कैपेसिटेंस को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी पास जो लाइन हो जाएगी वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? सिर्फ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस से, ठीक है। तो हमारा मॉडल ऐसा बनेगा, दिस इज वी एस, आई एस, मॉडल क्या है? आर एंड एल, ठीक है। देन यहाँ पर आई आर, एंड यहाँ पर वी आर। ओके, इट इज आर, दिस इज एक्स। सो इक्वेशन क्या बन जाएगी? V इज इक्वल टू वी आर प्लस, दिस इज Z टोटल इन Z, Z आई आर, एंड आई एस इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। सो हेयर A is 1, B is Z, C is 0 and D is 1. Okay, A is 1, B is Z, C is 0, D is 1, ठीक है। सो हम सिमेट्री से चेक भी कर लेते हैं। फॉर सिमेट्री AD minus BC should be 1. A is 1, D is 1, minus B is Z, C is 0. So this is 1. So this is right. अब निकाल लेते हैं हम efficiency, percentage efficiency. What is percentage efficiency? In output by input into 100. Output is VR, IR, cos phi r. Input is Vs, Is, cos phi s into 100. So this is same. So Vr cos phi r by Vs cos phi s into 100. So this is percentage efficiency. Now percentage regulation. Percentage regulation is V dash minus VR upon VR. Okay. Here V dash is what? Receiving end voltage at no load. This is V dash is receiving end voltage at no load. So at no load IS is 0, so V dash is equal to Vs, ठीक है। So percentage regulation is Vs minus Vr divided by Vr into 100. So this is percentage regulation. Now see phasor, this is VR, this is VR. IR lag by phase angle phi r.
is lagged by phi r. Okay, so IR into R is in this direction. Resistance drop is IR into R, and 90 डिग्री पे यहाँ पर आएगा what IR into X, एडमिटेंस ड्रॉप. ठीक है, नाउ this is equal to what? Z into IR, impedance drop. Okay, so VR plus ZIR, VR plus ZIR is what? VS. So this is VS, and VS और IR इज इक्वल टू IS है. सो VS एंड IS इन दोनों के बीच का हमारा जो एंगल है ये है phi s. सो दिस इज द फेजर डायग्राम. सो ये था हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, सिंपल है बहुत. इसके बाद हम देखेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन. इसमें हम देखेंगे टी मॉडल, पाई मॉडल. ठीक है, और हम टी मॉडल कहाँ यूज़ करते हैं, पाई मॉडल कहाँ यूज़ करते हैं, ये भी देखेंगे. थैंक यू.